Hi, good evening. The aim of today's session is to go ahead and do the back questions of Serrano. So this is chapter 2, and since we have already completed chapter 2, we should go ahead and also do these back questions once. So better look at the first back question that we have. This says, we assumed at the beginning of the chapter that so just try to think about it, that a consumer's preference must be transitive, but we hinted that there might be interesting exceptions. Here are two. So this is the first one. They have given you this example, and they're asking you why this violates transitivity. ये transitivity को follow क्यों नहीं करता है, आपको इसमें ये समझाना है, ठीक है? So beta, let us look at the solution to this. ध्यान से question पढ़ो. A consumer likes sugar in her coffee, but she simply cannot taste the difference between a cup of coffee with n grams and n plus 1 grams of sugar. मतलब ये ऐसे है, जैसे suppose beta I ask you, I am making tea for you and I ask you how many cups of sugar do you like? You tell me, ma'am, put either 2 or 3, I am fine with it. So या 2 या 3 cups of sugar are absolutely fine, right? Then beta, that is where you are indifferent between the two spoons. Hai? So whether you have 2 spoons of sugar or 3 spoons of sugar, you are indifferent between the two. ठीक है? ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिए, that the consumer is indifferent between n and n plus 1 grams of sugar. मतलब उसे ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आता कि क्या दो स्पून शुगर है या 3 स्पून, या 3 स्पून शुगर है या 4 स्पून, वो उसके बीच में इंडिफरेंट है. बट अ कंज्यूमर, suppose a teaspoon of sugar is 6 grams and suppose she takes her coffee with 1 teaspoon of sugar. Why does this violate transitivity? पहले मैं एकदम इजी लैंग्वेज में एक बारी समझा दूं, फिर हम इसका प्रूफ लिखेंगे, ठीक है? तो ध्यान से समझो. देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर सिर्फ n एंड n प्लस 1 ग्राम्स में इंडिफरेंट है. मतलब आपको ये नहीं समझ में आता कि क्या एक टी में 2 ग्राम शुगर गई है या 3 ग्राम, इनके बीच में आप इंडिफरेंट हो. ऐसे ही 3 और 4 के बीच में भी इंडिफरेंट हो गए, क्योंकि n को मैं 3 ले सकती हूं तो n प्लस 1 4 हो जाएगा. सो यू आर इंडिफरेंट बिटवीन 3 ग्राम्स ऑफ शुगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड 4 ग्राम्स. बेटा ऐसे ही यू विल बी इंडिफरेंट बिटवीन 10 ग्राम्स एंड 11 ग्राम्स. आप इनके बीच में भी इंडिफरेंट हो गए, है ना? क्योंकि n और n प्लस 1 के बीच में यू आर इंडिफरेंट बिटवीन द टू. तो यहां से जरा समझने की कोशिश करो. आप 4 और 5 के बीच में भी इंडिफरेंट हो गए, 5 और 6 के बीच में भी इंडिफरेंट हो गए, 6 और 7 के बीच में इंडिफरेंट हो गए, सो ऑन. तो जब आप ऐसे करते जाते हो तो ट्रांजिटिविटी क्या सजेस्ट करती है? ट्रांजिटिविटी ये सजेस्ट करती है कि अगर मैं इस बंडल में 2 और 3 के बीच में इंडिफरेंट हूं, और 3 और 4 के बीच में इंडिफरेंट हूं, और 4 और 5 के बीच में इंडिफरेंट हूं, 5 और 6 के बीच में इंडिफरेंट हूं, 6 और 7 के बीच में इंडिफरेंट हूं, तो इस हिसाब से मैं 2 और 7 के बीच में भी इंडिफरेंट हूं. मतलब जितनी यूटिलिटी मुझे 2 से मिलती है और 7 से मिलती है वो बराबर की है, क्योंकि ट्रांजिटिविटी से मैं A और B के बीच में इंडिफरेंट हूं, इन दोनों के बीच में, पर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके, तो इस मतलब तो मैं 2 और 7 के बीच में भी इंडिफरेंट हो गई. बट ये तो गलत है. अगर एक टी में मैं सिर्फ 2 ग्राम शुगर डालूं और एक टी में मैं 7 ग्राम शुगर डालूं, तो बेटा ये दोनों सेम थोड़ी हैं, ये दोनों तो अलग हैं, है ना? इसमें तो आप क्लियरली बता पाओगे कि मैम इसमें बहुत इमेंस शुगर है, ये बहुत ज्यादा मीठी है. सो आर यू गेटिंग इट? सो यू मे बी इंडिफरेंट बिटवीन 2 and 3, बट यू आर नॉट इंडिफरेंट बिटवीन 2 and 7. बट इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप 2 और 7 के बीच में भी इंडिफरेंट हो, जो गलत होगा कहना. मतलब ये एग्जाम्पल के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिविटी वायलेट हो रही है.
क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 और 3 के बीच में इंडिफरेंट हूँ, 3 और 4 के बीच में इंडिफरेंट हूँ, 4 और 5 के बीच में इंडिफरेंट हूँ, n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। और क्वेश्चन कहता है कि मैं n और n+1 ग्राम ऑफ शुगर के बीच में इंडिफरेंट हूँ। तो यहां करते 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 मैं 2 और 7 के बीच में भी इंडिफरेंट होंगी, जो गलत होगा कहना। बिकॉज एक टी जिसमें 2 ग्राम शुगर है और एक टी जिसमें 7 ग्राम शुगर है, वो बहुत ही अलग होंगे। जितनी उनकी मिठास होगी, जितना उनका शुगर लेवल होगा, वो बहुत ही डिफरेंट होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू व्हाई दिस एग्जाम्पल it violates transitivity. Now beta, we will write this in formal English and formal microeconomic solution, that if this comes in exam, how should you be writing the answer to it. So please likhna shuru karo. Let, tell me if you have any doubt in between. Let x is equal to x1 x2 denote consumption bundle x in 2 commodity space with good one measured on horizontal axis and good 2 on vertical axis. ठीक है बेटा, तो मैं 2 गुड्स ले रही हूं, एक गुड 1 एक गुड 2, और मैं ये कह रही हूं कि ये ऐसा कुछ बन रहा होगा। गुड 1 जो है वो यहां पर मेजर हो रहा है और गुड 2 जो है वो यहां पर मेजर हो रहा है, जो टिपिकल हम बोलते हैं, है ना। अब बेटा मैं कह रही हूं अ कंज्यूमर इज सेट टू फॉलो, पहले हम ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन देंगे। ट्रांजिटिविटी इफ, तो कब एक कंज्यूमर ट्रांजिटिविटी फॉलो करता है? अगर मैं 3 बंडल्स ले लूं, x जो बंडल है x1 x2, y जो बंडल है y1 y2, एंड z जो बंडल है बेटा z1 z2, तो एक कंज्यूमर जो है वो ट्रांजिटिविटी तब फॉलो करेगा अगर हमें इनसे सेम यूटिलिटी मिल रही होगी। मतलब अगर, so if I am indifferent between x and y and y and z, then x and z should be indifferent. ये ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन हो गई कि अगर आप x और y के बीच में इंडिफरेंट हो और y और z के बीच में इंडिफरेंट हो, तो आपको x और z के बीच में भी इंडिफरेंट होना पड़ेगा। ये हमने डेफिनेशन बता दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अपने क्वेश्चन पे जाना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये हमेशा एग्जाम में फॉलो करना है। पहले आपको एग्जाम्पल देना है, डेफिनेशन देनी है कि ट्रांजिटिविटी होती क्या है, और उसके बाद ही आपको अपने क्वेश्चन पे फॉलो अप करना है। बेटा लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ, सो प्लीज राइट द क्वेश्चन। स्टेट्स दैट consumer likes coffee with sugar and is indifferent between n and n+1 grams of sugar। ठीक है बेटा, आगे लिखो। सपोज x1 represents 0 ग्राम ऑफ शुगर, इसको x0 कर लो। x0 represents 0 ग्राम ऑफ शुगर, x10 represents 10 ग्राम ऑफ शुगर। बेटा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि जिस कॉफी में शुगर होती है, कंज्यूमर उसको प्रेफर करता है, कंज्यूमर को पसंद है कि शुगर हो कॉफी में, है ना। तो अगर मैं इन दोनों बंडल्स की बात करूं, एक जिसमें शुगर नहीं है, 0 ग्राम मतलब उसमें शुगर नहीं है, और दूसरा जिसमें शुगर है, तो मुझे क्लियरली पता है कि जिसमें शुगर है
उसको मैं प्रेफर करूंगी जिसमें शुगर नहीं है. अ बंडल विथ शुगर must be preferred over bundle without sugar. है ना. जिस बंडल में शुगर नहीं है उसको मैं कम प्रेफर करूंगी और जिसमें शुगर है उसको ज्यादा प्रेफर करूंगी. अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है बेटा, सपोज आई टेक एन एस 0. तो ये क्या बोल रहे हैं, मैं उन दो बंडल्स में इंडिफरेंट हूं जिसमें एक में n ग्राम शुगर है और एक में n+1 ग्राम शुगर है. उन दोनों के बीच में मैं इंडिफरेंट हूं. तो अगर मैं n को 0 लेती हूं, मतलब जिसमें 0 शुगर है और जिसमें 1 शुगर है, n+1 मतलब 0+1, उनमें मैं बीच में इंडिफरेंट हूं. सिमिलरली बेटा, अगर मैं n को 1 लेती हूं तो मैं x1 और x2 के बीच में इंडिफरेंट हूं. और अगर मैं ऐसा ही करती रहूं और मैं n को 9 ले लूं तो मैं x9 से लेके x10 के बीच में इंडिफरेंट होंगी. सो फ्रॉम दीज इक्वेशंस, लिखो, फ्रॉम अबव इक्वेशंस, देखो बेटा, x0 और x1 के बीच में हम इंडिफरेंट है, x1 और x2 के बीच में हम इंडिफरेंट है, ऐसे ही x2 और x3 के बीच में इंडिफरेंट होंगे, x3 और x4 के बीच में इंडिफरेंट होंगे, मतलब x9 x10 के बीच में हम इंडिफरेंट होंगे. तो जब आप इन सबको एक साथ कंबाइन करोगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट दैट यू आर इंडिफरेंट बिटवीन x0 एंड x10. तो ये बोलता है कि एक कॉफी जिसमें बिल्कुल शुगर नहीं है और इसमें जिसमें 10 ग्राम शुगर है, उनके बीच में हम इंडिफरेंट है, वो दोनों हमें सेम यूटिलिटी देती है. बट हमने ऊपर ही लिखा ना कि जिसमें शुगर है वो ज्यादा प्रेफर्ड कॉफी होगी. तो बेटा ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई. सो लिखो, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. देयरफॉर दिस डज नॉट फॉलो ट्रांजिटिविटी. बेटा ये एग्जाम्पल ट्रांजिटिविटी को फॉलो नहीं करता है. दैट इज योर दिस फर्स्ट 1A का आंसर ये होगा. ओके, नाउ बेटा कम टू द सेकंड क्वेश्चन 1B. I have, please make a note of this, in class 1 lecture 1 I have already done this in the live lecture, so please refer to lecture 1 and I have already covered this question. Everybody will take it from there. Okay, now better come to the next question. Question number 2, ये start करते हैं, देखना. So this is, consider the utility function u is equal to x1 x2. बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था और मैंने कुछ रिकॉर्डेड इसके लिए बेसिक वीडियोस भी अपलोड की हैं जिसमें आप जाके पोर्टल पे चेक कर सकते हो. Where I have gone ahead and I have told what this function is. So this is called a well-defined indifference curve. Well-defined IC बोलते हैं इनको, है ना बेटा. अब क्वेश्चन देखो. Graph the indifference curve for utility levels 1 and 2. Graph the locus of the points for which MRS of good 2 is equal to 1 and locus of point for which MRS is equal to 2. ठीक है बेटा, करना शुरू करते हैं क्वेश्चन. So write down question number 2 now. So you are given that the utility function is x1, x2. Now, in the first question, it is asking you to represent a level curve. पहले level curve की definition दोबारा revise करते हैं. What is a level curve? A level curve is any curve where you hold this z variable constant. So please write down beta. The indifference curve for a utility function u and drawn for different utility levels given by u of x1 x2 is equal to c is called a level curve. है ना. तो जब मैं when I go ahead and I equate this बेटा, जब मैंने इस utility को equate किया, I can equate it to 1, I can equate it to 2, I can equate it to 4.
So when I go ahead and I equate it to some value, then what I get is called as a level curve. Okay, beta. Now the question is saying you need to draw the level curves for different values of utility, and it is given to draw this for u is equal to 1 and u is equal to 2. So beta, first of all, I will draw it for u is equal to 1. That means that you want x1 into x2 is equal to 1. So beta, what can we do? We can take different values of x1, x2, which when multiplied will give you 1. So dekho, if x1 is half, this will be 2. Half into 2 is 1. Then beta, if this is 2, this will be half. If this is 1, this will be 1. If this is 1 by 4, this will be 4. If this is 4, this will be 1 by 4 and so on. So these are the different values which when multiplied, beta, they will give you the answer as 1. So dekho ek baar zara dhyan se, what can we do? So I can take good 1 here and I can take good 2 here. Okay, beta. This is 1. Let me draw 1 here. This is 1. This is also 1, beta. 1 into 1 is 1, na? So it satisfies this equation. 1 into 1. So this is 1 point. Then the other point I have is half into 2. So beta, if I take half here, then I will have 2 here. That means this point. Similarly, I can take the point as 2 into half. So beta, this point. If you join all such points, what you will get is called an indifference curve. This is what the question is saying. So, ek baar dhyan se dekho what the question stated. The question says, draw the indifference curve for utility level 1. So I've taken utility at 1 and I've plotted this. Now it says, draw this for utility level of 2. So beta, let us draw this further. So now I have u of x1, x2 as 2. Again, I will take different points, x1, x2. So beta, we know that half into 4 is 2. 4 into half is 2. 2 into 1 is 2. And 1 into 2 is also 2. है ना? So my utility function given to me is x1, x2. मेरे को इस x1, x2 को 2 से equate करना. I need to equate this to 2. बेटा बना लो सर फिर. What will you get? You will have good 1 here. You will have good 2 here. ठीक है बेटा? तो ये आपकी values हो जाएंगी 1, 2, 1, 2. So 1 into 2 is 2. 2 into 1 is 2. And half into 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा is 2. And half into 4 यहाँ आ जाएगा is 2. So we have to find out all values of x1 into x2 giving me 2. वो ही उसका IC represent करेगा. So if you join this, beta, you will get another indifference curve. So that's the answer to the first part where it says plot the indifference curve. We have done this. Now go to the next part. Draw the locus of points for which MRS of good 2 for 1 is equal to 1. So pehle MRS nikal lete. So second part. Write down the second part, beta. Before you draw this, jab bhi exam mein you get such questions, it is my humble request, please write the definition first. Definition se pehle aage nahi badhna hai. Pehle hame definition likhni hogi, hai na? So please write down the marginal rate of substitution of good x2 for good x1 is the rate at which consumer is willing to substitute 1 unit of good 2 in exchange of good 1. So the rate at which consumer is willing to substitute 1 unit of good 2 for good 1.
ये हमने क्लास में भी we discussed this in the last classes. That is called MRS. Now what you can do, beta, MRS is given to you as x1 into x2. So in order to find this MRS, we know the formula that MRS is given by mu1 divided by mu2. If I differentiate this with respect to good one, that is marginal utility. So beta, differentiate this with respect to x1, differentiate this with respect to x2. So when I differentiate this with respect to x1, what will I get? I will get x2. When I differentiate this with respect to x2, what will I get? I will get x1. Now the question is telling me that I need to equate MRS to 1. यही तो पूछ रहा है कि MRS 1 कब होगा? So beta, x2 by x1 is equal to 1. That means x2 is equal to x1. बेटा x2 is equal to x1 मतलब जो x axis पे वैल्यू आ रही है और y axis पे आ रही है वो इक्वल है. बेटा दिस इज नथिंग बट अ 45 डिग्री लाइन, है ना? सो अगर मैं यहां पर जाती हूं, इफ आई गो हियर, x2 is equal to x1 में MRS equal to 1 आ रहा है, तो बेटा ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे x2 कितना है? 1. x1 भी 1 है और x2 भी 1 है, दोनों 1 है ना, मतलब x2 and x1 are equal to each other. So if I draw a line through this, let me draw a line through this. ये जो लाइन होगी, this line represents x2 is equal to x1. Along this line is ray के around. So along this line, your MRS will be 1. Along this line, the MRS will be 1. Achha, just think about this. But if I go ahead and I want to superimpose this indifference curve above, अगर मेरे को ये IC ऊपर लेके जाना है तो कैसे हो सकता है? ये पॉइंट हो गया 1,2 था, ये पॉइंट बेटा था 2,1. So if I need to plot this, 1,2 हो गया ये पॉइंट, 2,1 हो गया ये पॉइंट. So बेटा my IC will look something like this. This is my IC which represents utility level of 2. And this is my IC which represents utility level of 1. तो बेटा ये समझो, what is MRS? MRS तो स्लोप था इंडिफरेंस कर्व का. तो माने अगर मैं यहां से टैंजेंट लाइन प्लॉट करूंगी तो वो टैंजेंट लाइंस पैरेलल आएंगी. पैरेलल क्यों? बिकॉज लाइंस व्हेन दे आर पैरेलल दे हैव द सेम स्लोप. तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल टू ईच अदर है मतलब इनका स्लोप इक्वल है ना? तो बेटा अगर मुझे बताना है कि क्योंकि स्लोप यहाँ पे सेम है ना, स्लोप तो MRS है और MRS इक्वल टू 1 है along this ray. तो बेटा if I draw tangent lines means I draw the slope should be equal, and वो स्लोप की क्या वैल्यू रही होगी? वो स्लोप की वैल्यू रही होगी 1. I hope you are able to understand. So I draw a ray through the origin. ये जो ray है ये ray रिप्रेजेंट करती है x2 is equal to x1. ये कब आया था? ये आया था when I got better that MRS will be equal to 1. This is when I got that. So this line represents the slope of 1 for all indifference curves. Okay, better come to the second part now. So now it says I want MRS equal to 2. So beta, what is MRS? MRS is x2 by x1. So I will have x2 by x1 is equal to 2. That means beta x2 will be 2 times x1. So x1 जब half रहेगा तो x2 2 times half, that means 1 रहेगा. बेटा x1 जब 1 रहेगा तो x2 2 times 1 मतलब 2 रहेगा. तो इसके क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे? इस लाइन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, इस लाइन के पॉइंट हो जाएंगे when x1 is half, x2 is 1. When x1 is 1, x2 is 2. 2 times x1, है ना? So half comma 1. तो यहां देखो बेटा एक बार दोबारा, half comma 1 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या आया हमारे पास? 1,2. यही पॉइंट आया ना बेटा, 1,2. So that is going to be here, 1,2. So when I draw a line through this represents beta that MRS will be 2. I hope this is clear. This represents that your MRS is going to be 2. Okay. Okay, come to the next question.
Start reading this. Okay. So question says, different students at world's greatest university have different preferences about economy. Draw the indifference curve associated with each statement. Measure economics book on the x-axis and books about other subjects on the y-axis. Draw arrows indicating the direction in which utility is increasing. Good question. ठीक है बेटा? तो इसके लिए ना, please go through the videos, recorded videos that I have posted on your portal. कुछ extra पढ़ना पड़ेगा, वरना ये back questions नहीं हो पाएंगे from the chapter. So you have to go through the recorded videos. Everybody has to go through those videos. Okay. All right. So let us read the first part. I care only about the total amount